Hi boys and girls, I am REYANSH OJHA and welcome back with another video. So I hope you are absolutely fine and doing very well. So first we do warm up and then we go. So let's do it. I can hear your voice. I can hear your voice. इसमें आपको पैर की पोजीशन को थोड़ा सा वाइड रखना है, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रखना है इसको, ठीक है। देन जब आप डाउन जाएंगे तो अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। इसको डाउन जाना और इसको पीछे नहीं ले जाना, इसको स्ट्रेट ऊपर उठना है, पुश करना है इसको इस टाइप से, और अपनी नीज को लॉक नहीं करना है, थोड़ा सा बेंड करना है। I can hear your voice. इसमें पैर को इस टाइप से फिक्स करना है, वेट आपकी जितनी कैपेसिटी उतना लेना है। देन इसके बाद आप जब डाउन आएंगे, इसको डाउन लेकर आना है, तो आपको इतना नीचे लेकर आना है, आपको इस टाइप से नहीं लगाना है, ये हाफ वे में नहीं लगाना है, आपको पूरा फुल नीचे तक स्क्यूज करना है इस टाइप से। देन इतना, और आपको इसमें पैर को इस टाइप से फिक्स करना है, वेट आपकी जितनी कैपेसिटी उतना लेना है। देन इसके बाद आप जब डाउन आएंगे, इसको डाउन लेकर आना है, तो आपको इतना नीचे लेकर आना है, आपको इस टाइप से नहीं लगाना है, ये हाफ वे में नहीं लगाना है, आपको पूरा फुल नीचे तक स्क्यूज करना है इस टाइप से।
देन नाउ I can hear your voice. I can hear your voice. जब आप लेग एक्सटेंशन लगाएंगे तो उसको सिर्फ इतना लाना है और आपको ये हमेशा याद रखना है कि इसके बीच में आपको गैप नहीं होना चाहिए, बेंच और इसके बीच में आपको गैप नहीं होना चाहिए, उसको फिक्स करके रखना है। फिर लॉक करेंगे और वेट आपको कैपेसिटी के अनुसार लेना है। इसका फिर इतना स्ट्रेट आपको अपने टो को अप रखना है इस टाइप से। इसमें आपको पैर की पोजीशन इस टाइप से रखना है, आपको टो को अप रखना है, फिर इसको लॉक करेंगे। इसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा दूर रखना है आपको। फिर इसके बाद इसको इस टाइप से हटाना है और यहाँ पर लाके थोड़ा सा एक्सक्यूज करना, थोड़ा देर रोक के रखना आपको। इसके बाद वापस से फिर रिलैक्स। आपको इस टाइप से नहीं लगाना कि ये नहीं लगाना, आपको बिल्कुल स्लोली लगाना, एक्सक्यूज करना उसको और फिर रिलीज़ करना है। स्क्वीज फिर रिलीज इस टाइप से। अगर आपको लंजेस लगाने में प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले बस आपको पोजीशन इस टाइप से रखना है। तो फर्स्ट आप पोजीशन को इस टाइप से रख लीजिए, अपने पैर को स्टेबल इस टाइप से कर लीजिए इस टाइप। और जब आप डाउन जाएंगे तो इसको टच नहीं करना, आपकी नीज को टच नहीं करना फ्लोर से, इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है इस टाइप से। इसमें आपको पैर को इस टाइप से रखना है, इतना हाफ, फिर इसके बाद पूरा डाउन, इसका पूरा अप, स्क्यूज करना है कुछ सेकंड के लिए, इसका डाउन,
फिर आप इस टाइप से